The crucial developments in the national capital, wherein the Supreme Court has granted bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the excise policy case. The top court had reserved the verdict on the 5th of September after hearing counsels representing Arvind Kejriwal as well as the CBI. During the hearing of the case, Additional Solicitor General S.V. Raju, appearing for the CBI, had objected to Kejriwal for not approaching the trial court for bail. Justice Puyan has underlined that bail is the rule and jail is the exception. The Delhi Chief Minister was arrested by the ED on the 21st of March in connection with a money laundering probe relating to the irregularities in the now scrapped Delhi excise policy case. On the 26th of June, he was arrested by the CBI while he was in the custody of the Enforcement Directorate in the matter. My colleague Shubrana joins us from the Aam Aadmi Party office in New Delhi, where live visuals, of course, are coming in as well. You see, of course, Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party along with other AAP leaders celebrating the bail that has been granted to Delhi Chief Minister and AAP Supremo Arvind Kejriwal. Shubh, over to you. Take us through what's really happening. Yes, definitely, Devika. Would like to show you the visuals over Aam Aadmi Party office here, because since the time when Arvind Kejriwal have got bail, there was huge celebrations there. But since rain has started pouring in, that's why the Aam Aadmi Party Karyakartas have moved inside. But as soon as Arvind Kejriwal got bail, there were posters of Satyamev Jayate. Aam Aadmi Party Karyakartas are also here, along with Aam Aadmi Party MLA Sanjeev Jha. We have with us this time. And as soon as Arvind Kejriwal got bail, he had said that there is a victory of Satyamev Jayate, because 6 months and now Arvind Kejriwal is out from the jail. Let's hear from Sanjeev Jha. Sanjeev ji, Arvind Kejriwal बाहर आ गई हैं, कैसे इसको देखते हैं आप? 6 महीने का इंतजार आप? मुझे लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी का बाहर आना और आज जो बेल ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज सीबीआई का अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम तो शुरू से कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केस्ड पैरेट की तरह बिहेव कर रही है। आपने कहा कि अब टाइम आ गया है कि वो डिस्पेल करें इस नोशन को कि वो केस्ड पैरेट नहीं है, हिदायत देती सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम तो शुरू से कह रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है कि ये सीबीआई का अरेस्ट ईडी के बेल को फ्रस्ट्रेट करने के लिए किया गया था। मुझे लगता है बहुत ज़ोरदार तमाशा है नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे ये सारी बातें। आज समय आ गया है, थोड़ी सी शर्मो हया अगर बची हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, देश के सामने आइए और देश से माफ़ी मांगिए कि आपसे गलती हुई, क्योंकि आज मैं नहीं, वो सभी बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया। बट भारतीय जनता पार्टी हैव बीन सेइंग कि इतनी खुशी बनाने की क्या ज़रूरत है, बाइज्जत बरी थोड़ी हुए हैं, जमानत पर बाहर आए हैं, उस पर संजीव झा आपका क्या रिएक्शन? भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों की पार्टी है। कल तक जब आप जाते होंगे तो क्या कहते थे, अरे ईमान अगर इनोसेंट है तो बेल क्यों नहीं मिलती? आज बेल मिल गई। इस मूर्खों को कहिए कि हम बेल मांगने जाएंगे तो बेल ही मिलेगी ना। अरे इनोसेंट तुम ट्रायल शुरू करो, निर्दोष भी हो जाएंगे। तुमको पता है कि वो इनोसेंट ट्रायल शुरू नहीं कर रहे, तो ये मूर्ख लोग हैं या बेशरम हैं, वो कुछ भी अब क्या कहेंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? या तो आगे आके माफ़ी मांगें या कोई बात बनाएं। हैं बेशरम, माफ़ी मांगेंगे नहीं तो बातें बना रहे हैं। सर ये बताइए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में आपके कई विधायक, कई पार्षद, एक मंत्री भी आपका भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है सर आगे की रणनीति पर क्या असर होगा? देखिए, कोशिश तो इनकी यही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दो, सभी बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दो, पार्टी तोड़ दो। पार्टी नहीं टूटी, पार्टी एकजुट खड़ी थी। हाँ, कुछ एक दो विधायक गए, उनको डराया गया। आप भी जानते हैं, किसी पे ईडी का रेट था, किसी पे इनकम टैक्स का रेट था। अब नहीं, अमानत जी ने जेल जाना स्वीकार किया, इनके आगे घुटने नहीं टेके हैं। जो एक दो घुटने टेके इसलिए टेके कि उन पे पहले से ही केस था। हर कोई इस लड़ाई में उतनी मजबूती से लड़ेगा ये जरूरी नहीं है। कई आदमी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, कई को परिवार प्राथमिकता है, कई के लिए अपना काम प्राथमिकता है, सबको देश प्राथमिकता नहीं है। हमेशा साथ में खड़े रहे और हमेशा साथ में खड़े रहेंगे। केजरीवाल जी को बेल मिली है ना, परिवार को डेकोरेट करेंगे या अपने व्यवसाय को डेकोरेट करेंगे। हम आए हैं देश बनाने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जेल चुना, मनीष जी ने जेल चुना, संजय भाई ने जेल चुना, सत्येंद्र जैन साहब ने जेल चुना।
अमानत जी ने जेल चुना, हम सब जेल चुनने के लिए तैयार हैं। So Devika, here you were hearing Sanjeev Jha, who was proud and confident of Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal coming, and therefore it is a big victory for Aam Aadmi Party, because now when Delhi Vidhan Sabha and Haryana Vidhan Sabha are round the corner, and thereby getting Arvind Kejriwal out of the jail is a matter of, Aam Aadmi Party is claiming it as a win-win situation for them, Devika. Right, Shubh, I will come back to you in just a moment, and of course we will keep an eye out. Let's also go across to some of the other reactions that have also come in. Bharti was an Aam Aadmi Party senior leader also. Definitely, it's a big relief for the Aam Aadmi Party where Arvind Kejriwal finally got a bail. Sir, किस नज़रिए से देखते हैं कितना एक रिजॉइस का मोमेंट है, कितना एक खुशी वाला मोमेंट है आम आदमी पार्टी के? देखिए, इस वक्त सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, चूँकि अरविंद केजरीवाल जब पॉलिटिक्स में आए, जिस प्रकार की उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली की, पानी की, हर व्यक्ति इस व्यक्ति का मुरीद हो गया कि पहला व्यक्ति है जो हमारी आम ज़रूरतों को, इंसान की मामूली ज़रूरतों को समझ पाया है। आज दिल्ली में 20 से 25 हज़ार रुपया महीना हर परिवार को फ़ायदा पहुंचता है केजरीवाल जी की पॉलिसी के कारण। तो इसके कारण आज सबको फ़ायदा है, सबको खुशी, हर व्यक्ति खुश है। तो मुझे लग रहा है कि आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है, आज उस हर व्यक्ति की जीत हुई है जो कि संविधान विश्वास रखता है, जो डेमोक्रेसी को देखना चाहता है कि भाई हमारा शासन हो, हमारा तंत्र हो। तो आज उस चीज़ को बल मिला है और भाजपा को शिकस्त मिली है। उसके लाख प्रयासों के बावजूद केजरीवाल जी को जेल में रखने में वो नाकाम साबित हुए। और क्या लीगैलिटीज़ या फॉर्मेलिटीज़ रहेगी, कितना टाइम लगेगा उनको बाहर आने में? वो तो संभवतः आज शाम तक आ जाना चाहिए, और चूँकि इसमें तो कोई पाबंदी है नहीं, और बाकी जो कंडीशंस होंगे उसका पालन करेंगे हम। लेकिन राजनीतिक रूप से जो भाजपा की हार हुई है और आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, ये सबसे बड़ा न्यूज़ है आज के लिए। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या क्या लिमिटेशंस रहेंगी या कोई लिमिटेशंस एज सच रहेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये वो कर सकते, ये वो नहीं कर सकते? देखिए, राजनीतिक काम के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रचार करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। भाजपा इस देश की सत्ता में ना रहे, ये प्रचार करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा ने संविधान को मारा, डेमोक्रेसी को मारा, आज जग जाहिर हो गया कि भाजपा अपने मंसूबों में असफल रही, सफल साबित नहीं हो पाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो यस व्यूअर्स, दिस वाज सोमनाथ भारती, हु इज an Aam Aadmi Party leader of and who spoke about the Supreme Court verdict. This is me, Brian Adi Thomas, signing off with camera person Avinash for NewsX Delhi. We are joined by Rishesh Kumar, who is the legal counsel of Aam Aadmi Party. So my very first question to you would be, how do you see it? Arvind Kejriwal has got a bail. Supreme Court has given a verdict. How do you see this? This is a moment of happiness and rejoice for everyone. How do you see this? It is a great victory for us. It is a great victory for this country. It is a great victory for all those who have the faith in the judiciary. So, and today he will be granted bail. And as far as the illegal arrest is concerned, there were two judgments. One by the Justice Bhuyan, who said that CBI behaved like a caged parrot, and the arrest is completely illegal. The other judgment, dissenting judgment by Justice Suryakant, who said that no, the arrest was illegal. But as far as bail is concerned, he has been granted bail. He will be released very soon. Now, talking about the legalities and the formalities, how much time do you think will take him for him to leave from the jail? During course of the day, it will be completed, and he will be released in the evening. And my very last question to you would be, what limitations will he be having, or there will be no limitation as such for him? There is no limitation as far as the political activities are concerned, but there are certain conditions which was imposed earlier in the bail conditions. That will be there, but that in this also there is a difference of opinion by the judges. So once the bail order is out in detail, we'll study that and we'll take our recourse in coming future. Thank you so much, sir. So yes, viewers, this was Rishikesh Kumar who spoke about us exclusively and about the bail that Arvind Kejriwal got. This is me, Brian Adi Thomas, signing over with camera person Avinash for NewsX Delhi. Supreme Court grants bail to Arvind Kejriwal, and the Aam Aadmi Party saying they are happy and celebrating this event. Joining me, Delhi BJP President Viren Sachdeva. Sir, want to take your first reaction on this? कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है? आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं है, वो एक बेल क्लब है, एक जमानती क्लब है जिसमें एक नया मेंबर आज अरविंद केजरीवाल के रूप में जुड़ रहा है।
खुशी मनाते मनाते इनको कोर्ट के वर्डिक्ट को ध्यान से सुनना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। अगर गिरफ्तारी लीगल है तो उसका मतलब जांच एजेंसी ने जो सबूत और जो तथ्य कोर्ट को दिखाए हैं, कोर्ट भी उससे संतुष्ट है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है। बेल मिलना एक कोर्ट का प्रोसीजर है, लेकिन भूमिका है तो अरविंद केजरीवाल को सजा भी निश्चित रूप से मिलेगी। और जिस तरह की पाबंदियां कोर्ट ने लगाई हैं कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री होते हुए आप अपने कार्यालय नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, आप विदेश नहीं जा सकते और आप इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अगर थोड़ी सी भी नैतिकता, जिसकी उम्मीद कम है मुझे, अरविंद केजरीवाल में बची है, तो इन पाबंदियों के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है जिनको भी जेल, उनका कहना है कि बीजेपी ने भेजा था, सभी बेल पे बाहर आ चुके हैं और ये सत्यमेव जयते जीत है। अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, विभव कुमार, जितने भी लोग हैं, मैंने बताया ना कि कोर्ट ने उनको बेल दिए प्रोसीजर के तहत। लालू यादव भ्रष्टाचार के आरोपी, चारा घोटाले में बेल इनको भी मिली थी, बाद में क्या हुआ, जेल में रहना पड़ा, सजा मिली। तो आज यहाँ लालू की फोटो, कल अरविंद केजरीवाल की। सर वही बात करें तो हरियाणा चुनाव में सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और उसके बीच में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, स्टार कैंपेनर भी है वो आम आदमी पार्टी के। किसी भी दल को कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, आम आदमी पार्टी भी लड़े। और जहां तक अरविंद केजरीवाल के प्रचार की बात है, दिल्ली के लोकसभा चुनावों में हमने उनका प्रचार करते हुए देखा और दिल्ली की जनता ने उन्हें मकबूल जवाब दिया, हरियाणा की जनता भी जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ में मौजूद है। नकवी साहब, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, यानी शराब घोटाले के तमाम सारे आरोपी बाहर आ चुके हैं। देखिए, एक चीज पहली बात समझना होगा कि जो लोग अभी तक जो है वो पानी पी पी करके पूरी की पूरी न्यायपालिका को, न्याय व्यवस्था को गाली देते रहे हैं, कानून को गाली देते रहे हैं, उनके लिए सबक भी है, संदेश भी है। कानून अपना निष्पक्षता के साथ काम करता है, न्यायपालिकाएं निष्पक्षता के साथ काम करती हैं। फिर एक बात ये साबित हुआ है, सत्य की जीत हुई है। देर हो सकती है लेकिन सत्य की जीत। भाई ये पहले ये तय कर लें कि इनके लिए सत्य की जीत कब होती है और सत्य की हार कब होती है। ये अपनी सुविधा के अनुसार सत्य की जीत और सत्य की हार बताते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। थैंक यू। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनका साफ कहना है कि सत्य और झूठ का फैसला ये खुद करते हैं अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़। All right, so there you've heard it. I'm yet to receive the link for the verdict, but viewers, we've just got a copy of it with us, and I'm just going to read out as far as the conclusions are concerned in the Supreme Court verdict. What is it that the court has said? They've said that the criminal appeal challenging the legality of the arrest is dismissed. So therefore, appeal number 1, which is the basic crux of what Arvind Kejriwal's counsels were saying, is that the arrest itself is illegal. That appeal has been dismissed by the Supreme Court. That's point number 1. Point number 2 is that the criminal appeal is allowed, and impunged judgment of the High Court dated 5th of August 2024 to that extent is set aside. Consequently, this is what the court has said. The appellant is directed to be released on bail in connection with the FIR number registered by the CBI upon furnishing bail bonds for a sum of rupees 10 lakhs with 2 sureties of such like amount to the satisfaction of the trial court. So that's condition number 1. Of course, the bail bond has to be submitted. The appellant shall not make any public comments on the merits of the CBI case because it is sub judice before the trial court. This condition is necessitated to dissuade a recent tendency of building a self-serving narrative on public platforms. So this is a little bit taking into the criticism that had come out after Arvind Kejriwal was granted bail. Remember, the first time around, interim bail he was granted to make certain public appearances ahead of the Lok Sabha elections, and a lot of people felt that Arvind Kejriwal, even though the court had mentioned then that you should not be talking about your case, certain comments were made by Arvind Kejriwal, were made by the Aam Aadmi Party, and there was not much that the courts could do at that point in time. So the second condition that the courts have put out at this point in time is that the appellant shall not make any public comments on the merits of the CBI case because it's a sub judice matter, and they're doing so keeping in mind a recent tendency of building a self-serving narrative on public platforms. Then the third condition is that
the above condition shall not preclude the appellant from raising all his contentions before the trial court. So, of course, the matter, the court says, must go on before the trial courts. The fourth condition is that the terms and conditions imposed by a coordinate bench of this court passed in criminal appeal titled Arvind Kejriwal versus Directorate of Enforcement are imposed mutatis mutandis in the present case. The appellant shall remain present before the trial court on each and every date of hearing unless granted exemption. So, of course, the court is very clear that Arvind Kejriwal must continue to fully cooperate with the trial court proceedings and that he must be present on each and every date of the hearing. So, this is as per paragraph 47, which is the conclusion and that has also been mentioned by the justices of the Supreme Court, that they've mentioned all the conditions of his bail in paragraph 47, which is what I've just read out to our viewers. The first, of course, being a bail bond of rupees 10 lakhs. No public comments can be made on the merits of the CBI case. And, of course, Arvind Kejriwal must continue cooperating with the trial court proceedings. He must be present before the trial court on each and every date of hearing. This is what the Supreme Court has said. I'm going to request our producers upstairs, if they could just please send me a copy of this order so that I may open it up and show it to our viewers as well. That would be extremely helpful. I believe Vineet Jindal is with us on the broadcast. Okay, Vineet Jindal, lawyer with us on the broadcast. Mr. Jindal, as far as the conclusions of the Supreme Court order are concerned, I've just read them out for the public to understand, but Arvind Kejriwal not being allowed to sign any particular orders or resuming his duties as Chief Minister from the office of the Chief Minister, where exactly is it that the courts have mentioned that? Pardon, I just, can you repeat this? Vineet Jindal, can you hear me? Yes, please. In the conclusions that have been written by the Honorable Supreme Court, they have said that firstly, the Arvind Kejriwal's criminal appeal challenging the legality of his arrest, that's been dismissed. So that's done away with. What I'm trying to understand is, of course, there's a bail bond that has to be furnished. The second condition is that Arvind Kejriwal shall not be making any public comments on the merits of the CBI case. The third one is that he must continue cooperating with the trial court proceedings and he should be present for all hearings unless some sort of exception is granted. But at the same time, the BJP was saying that Arvind Kejriwal will not be allowed to really resume his activities as Chief Minister of Delhi, and that the court has said that he can't sign any official orders. How exactly does one draw that conclusion from what the Supreme Court has said? Look, Supreme Court has specifically stated this, that as a CM, Arvind Kejriwal cannot resume his offices, and the files, if needed to be signed in very urgent basis, it would be recommended by LG. So there is a specific order has been passed by the Supreme Court now that Arvind Kejriwal is not going to resume office as a CM of Delhi. So that is very clear. It is not any ambiguity in this aspect right now. Now, as the order has already been uploaded and order has been provided to everyone, so that has been clarified that Arvind Kejriwal is not going to resume office as a CM of Delhi. So the restriction has been imposed because if he will attend the office as a CM, he can influence the investigation. He can investigate the witnesses. He can influence the witnesses. So just to avoid this aspect and any miscarriage of justice, this condition has been imposed, and I think that is very relevant. If someone having a power, as we have seen that even after going to jail and specific allegation, Arvind Kejriwal declined to give resignation. We have seen in past that there are several CMs, there are several ministers who has been accusing with or having even name in FIR, then they will resign. But in this scenario, the Arvind Kejriwal scenario, he declined to do it.
So I think that is very reasonable restriction, and we have to appreciate. And I think Arvind Kejriwal must comply with these restrictions. Okay, but at the same time, Jindal, what does that really then mean for the people of Delhi who have been suffering the consequences of what's been happening with within the political parties and within with the political leaders as well? We've seen a very harsh monsoon season for the national capital. Soon there will be pollution in the national capital once again. Who's really then going to be able to look after these matters if the chief minister is out on bail but can't really perform his duties? I don't think it will be impact that much, because Arvind Kejriwal did not have any portfolio with him. So if Delhi government wish to do something better for the public, Arvind Kejriwal not resuming as in the office as in CM is can't stop and can't restrict them to do anything. But if they are not willing to do anything, definitely they can cite these restrictions. So it is upon the political aspirations of Aam Aadmi Party whether they are again trying to accuse BJP and the other parties that as we have or even Supreme Court that these restrictions has been imposed on Arvind Kejriwal being a CM, he cannot perform the duty, and Delhi public has been suffering because of this. So I don't think it is an appropriate one. Delhi CM, that is very much clear, and everybody knows about this thing, that Delhi CM did not have any portfolio. So the responsibility lies with the ministers only. If Delhi ministers will perform their duty, I think there is no hurdle to provide the basic facilities in respect of pollution aspect, in respect of water difficulty, sanitation. I think there is no difficulty to perform duty, even if the restrictions upon Delhi CM to resume his office as stated by the Supreme Court in its order. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.